Hello my dear you all, I am Rakesh Abhay from Sunbeam Sun City. Jai Hind bachcho. My dear, today's topic is a very important topic with the exam point of view in the concept of lateral displacement or in the concept of a rectangular glass slab. The question is, please focus on the question. The question is, consider a rectangular glass slab of thickness T. So there is a glass slab, you can see the glass slab. I have drawn this diagram. I have already made this assure of this diagram yesterday also. So this is a glass slab. Name of the glass slab is PQRS and the thickness of the glass slab is given as T, and I also have drawn the thickness of the glass slab as T, and refractive index is mu. My dear, this is the given from the question side that the glass slab Ri of glass slab. Please take care, they have given refractive index is mu. Kiska refractive index is mu? Glass slab ka Ri is mu. So here I have done two things. You all know that light coming from air going in glass and again it is coming in air. My dear, I have written here air. So refractive index of air I can write mu A, and refractive index of glass I can write mu G. You know about this yesterday, all my videos. Now mu A, if it is not given in the paper, if the question is something Ri is given for one medium, that is glass, and it is not given for the other medium from where the light coming, that is coming from air, but it is not given. It is but natural and understood that refractive index of air is 1. My dear, आपको ये याद रखना है और आपको ये मालूम होना चाहिए. Ri of air is 1, Ri of glass is 1.5, Ri of liquid, that is water, is 1.33. You have done in class 11th in practicals. So here I have taken air, jiska Ri is mu A and the value is 1, and the Ri of glass is denoted by mu G, which is given in the question as mu. Refractive index of glass is mu, they have given, and I have taken mu G as mu. So please make a note of this. Now the question is, obtain an expression for lateral shift. So where is the lateral shift? This is the lateral shift. Yesterday I have told you the perpendicular distance which we draw between the incident ray, produce incident ray, this is produce incident ray dotted line, and the emergent ray, this is the emergent ray. I have drawn the perpendicular distance. This distance is called, my dear, lateral displacement or lateral shift, and I have to obtain the expression. We have to derive the formula for this lateral shift, which is you are supposed to use in the numericals. Okay. And then the question is, can lateral shift or lateral displacement, that is this value, the value of small d, the value of lateral shift, the value of lateral displacement, can exceed the thickness of glass slab? Question is. Now my dear, thickness of the glass slab is given t, small t. Question क्या पूछ रहा है? क्या d का वैल्यू, lateral displacement का वैल्यू क्या थिकनेस को एक्सीड करेगा, बढ़ उससे ज़्यादा हो सकता है क्या? Right? For example, yesterday I have told you, if thickness is given say 5 centimeter, can this lateral displacement will be more than 5? Can it will be go beyond glass slab? Because thickness is within the glass slab. Thickness is this much. So क्या lateral displacement का value thickness से बड़ा हो सकता है क्या? मतलब incident ray is out of glass slab क्या possible है क्या? ये देखना है. Okay. So I hope you understood the question. So there are two questions. And one thing you are supposed to note down clearly. Sir, here Ri is for air is 1. We all know. If it is not given, we are supposed to know from today onward. And Ri of glass they have given in the question as mu, and therefore I have considered as mu. Second part is that, sir, we have to obtain the expression for this lateral displacement. इसका value ढूंढना है, इसका formula निकालना है जो numericals में काम आएगा. और दूसरा हमको ये दिखाना है कि क्या ये lateral displacement का value, क्या इसका जो फॉर्मूला आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, क्या ये थिकनेस से ज़्यादा हो सकता है? सो दिस इज द क्वेश्चन माय डियर, एंड आई हैव ड्रॉ द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. आई हैव टेकन इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग इन अ एयर, इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग इन एयर. लेट द नेम ऑफ द इंसिडेंट रे इज AB. इट मेक एन एंगल I with the normal, you can see. Now this incident ray is traveling from air to glass, so it will be bent towards the normal along BC. You can see along BC it is a refracted ray which is bending towards the normal. Am I clear? So this is the normal and this is the refracted ray. They make an angle of refraction. I have incident ray को मैंने यहाँ पे produce किया as we have doing.
right? So this is a produced incident ray, and then my dear, this refracted ray BC, this BC which is a refracted ray is become a incident ray, है ना? ये मैंने अपने कल के लेक्चर्स में बताया कि BC जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे बन गया फॉर विच सरफेस, फॉर सरफेस RS सरफेस के लिए BC become incident ray. Now this incident ray is traveling in glass, going in air, so of course sir it will be bend away from the normal. So here it is bending away from the normal along CF, you can see it is bending away from the normal, and I will call this CF as an emergent ray, and the angle between normal and this emergent ray is angle E. So I hope you are clear with the diagram. Let's proceed for its derivation. So in the derivation, my dear, beginning with the derivation, here I am writing to find small d, that is the question. To find small d, that is my question. Now my dear, very first thing, can you see the triangle? In triangle BDC, in triangle BDC, my dear, look at this angle. Now you all agree that this angle is I. This angle is I. Why this angle is I? Because it is vertically opposite. Because this is Chauvesar incident ray, you can see. So I have taken this is incident ray and this is the normal. This is the normal ray. So normal ray and incident ray angle I यहाँ पर है. So the same incident ray is coming here, and this is normal, and this is incident ray. So again here it is angle I, vertically opposite. So my dear, if this is angle I, so can't you see that this angle is I minus R. This angle is I minus R. Which angle, my dear? CBD. Angle in triangle BDC. I have taken BDC. I hope CBD is I minus R. Because this total is I. This total is I. This is R. This is R. So 100% this angle will be I minus R. So here in triangle BDC, angle from figure, angle CBD is equal to I minus R. I hope it is clear, right? In triangle BDC from figure BDC, the angle CBD is I minus R, because entire this angle is I. And this angle is R, so this angle become I minus R. Now, my dear, so therefore, in triangle BDC, what is sine of I minus R? Sine of I minus R will be nothing but perpendicular side upon hypotenuse side. Now perpendicular side is nothing but, my dear, you can see perpendicular side is CD. Perpendicular side ये है, इसका I minus R का perpendicular side है opposite side. Sine में opposite side होता है, तो that is written as perpendicular. So sine of I minus R is CD, that is perpendicular side. So this is CD divided by hypotenuse side. Hypotenuse you can see BC, because BD is perpendicular. BD is perpendicular, so hypotenuse is BC. So here it is BC. So now therefore my dear, this can be written as small d upon BC, because CD का value is lateral displacement small d. So here CD के जगह पे I have written small d, and I don't know the value of BC, so I have kept BC as it is. So now therefore if I BC will be get multiplied to this, therefore D is equal to BC into sine of I minus R.
this D, lateral displacement D is equal to this BC is in denominator, it will get multiplied to this and answer will be BC into sine of I minus R. I hope it is clear. Put this as equation number 1. Okay. Now my dear, let's proceed for the next triangle. That is, you can see one more triangle in the diagram. In triangle, so this is my step number 1. Step number 2, in triangle BEC, you can see BEC. So in that BEC triangle, angle CBE, I repeat, angle C, B and E. C, B and E. How much is that angle? How much is this angle? You can see the angle. That is R. So angle CB is equal to R. Okay. So in this triangle, therefore, in triangle BEC, what is sine of R? Or what is cos of R? Find out cos of R. In triangle BEC, what is cos of R? Cos of R is nothing but adjacent side upon hypotenuse side. So now how much is the adjacent side, my dear? In triangle BEC, adjacent side is BE. So this is BE divided by hypotenuse side is this only BC, because BE is the perpendicular also, so adjacent for R. R के लिए adjacent है और BC क्या है? Hypotenuse है. So this is BC. I hope यहाँ तक clear. So now my dear, what is the value of BE? The BE value will become BE is equal to, what is the value of BC? BC is equal to, therefore, BE divided by cos R. BC went here, cos R came here. So BC is equal to BE divided by cos R, and you can see from figure, here you can see how much is BE. BE is equal to T upon cos R, because from figure PR is equal to BE is equal to T thickness. जितना PR है, PR, that is PR मतलब slab का thickness, उतना ही BE होगा, because BE is parallel to slab thickness. You can see. So it is T only. So BE का value T हो गया. This is T by cos R. So I got the BC का value which is there in equation 1. I will put this as equation number 2. Now I will write substituting 2 in 1. We get. So when I substitute this 2 in 1, therefore D is equal to T upon, that is T upon cos R sine of I minus R. I got this value. Right? This is my, say, equation number 3. Now my dear, this can be written as D is equal to T upon cos R. This can be written as sin I cos R minus cos I sin R. How? Because you all know that is, since sin of A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. Sin of A minus B is sin A cos B minus cos A sin B. तो sin of I minus R क्या होगा? Sin I cos R minus cos I sin R. Take care, everybody, those who are observing the video, this is very important question. So now my dear, let this cos R went inside. So what will happen? Therefore, this is D is equal to T. This is sin I
cos r upon cos r minus cos I sin r upon cos r. I have taken this cos r inside. So this cos r and this cos r cancel. Therefore, here I will get d is equal to t inside the bracket sin I, cos r cancel, minus cos I sin r upon cos I sin r upon cos r. And this I will put it as equation number 4. So my dear, I hope you are clear with this much, that what I have done in my entire theory, I have done with that the d, that is lateral displacement of answer, I came to know that this is sin I minus cos I sin r divided by cos r. Now here there is one request which you are supposed to follow, and that is called Snell's law. Now my dear, before I'll go to the Snell's law, let me tell you one thing. So now my dear, you are supposed to use the Snell's law after this step number 4. So till now I hope you all understood. Once again you can see, sir, you have taken the two triangles. It is a matter of two triangles, please. One, and it's all depend upon your namings. The one triangle is BDC. I have taken that triangle first. In that triangle I have marked one angle here because D is 90 degree, and here BDC I have taken, where angle B पे I am getting the angle I minus R. Angle कहाँ angle पर? Angle B पे. Angle B पे. So angle CBD या DBC I am getting angle I minus R. So with that I minus R, first I will calculate sine of I minus R. ठीक है? Sine of I minus R will be opposite upon hypotenuse. Opposite is how much? D. Opposite is D and hypotenuse is BC. I have written. So small d का value lateral displacement मैं यहीं से लिखना शुरू कर दूंगा. Lateral displacement will BC into this, BC will get multiplied to this BC into sine of I minus R. Another triangle, my dear, I have taken BEC. In that triangle again B पे एक angle बन रहा है. That angle CBE, you can see CBE या EBC. Angle B पे the angle is R. So I have found this angle R का cos R. So in triangle BEC, in this triangle, I have found cos R. So cos of R is ये value. Cos of R will be adjacent side upon hypotenuse side. Adjacent side is BE and hypotenuse is BC. But my dear, what is that? I am interested to note down BC का value. BC यहाँ से निकालना चाह रहा था मैं. So BC will be transferred here and cos R will be come in denominator. So BC is BE upon cos R. BE का value I am getting from the figure, that it is equal to thickness because PR and BE are parallel, you can see. So BE का value is T, it is T by cos R. And then I will substitute in BC this value. Equation number 2 I put this as. So the equation 2 is substituted here BC के जगह पे. I got BC के जगह पे T divided by cos R sin of I minus R. What I did, I have opened sin of I minus R by the formula sin of A minus B. And I got sin I cos R minus cos I sin R. I have taken cos R inside. So cos R will cancel this cos R. I will get the value sin I. And this cos R will come in denominator of this question, term. That is cos I sin R divided by cos R. Now my dear, let us use the Snell's law. So now you can see my concept. First see the concept. Snell's law मैं use कर रहा हूँ. You can see I am taking the entire angle here. जितना भी मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, I have revised also. I am taking I minus R, I am taking R. Sir, ये जितने angles you have taken is for the light coming from air to glass. Please take care. This entire derivation which I am doing is in this area. That is for I minus R and that is for R. I am not going here. So there is no question of taking the concept glass to air. Glass to air मैं तब लेता जब मैं यहाँ पे कुछ solve करता. I am solving here this area and this area is air to glass because light air से आया and glass में आया और ये सब angles बनाया. अगर यहाँ पे लेता मैं तो मैं यहाँ पर glass से air concept लेता because यहाँ glass है और यहाँ air में जा रहा है. बट यहाँ पर मैं concepts ले रहा हूँ, अपने concepts जितने भी मैंने solve किया, revise भी किया,
is from air to glass because angle is over here, and these angles are formed when light are coming from air and going in glass. तो मैं स्नेल्स लॉ जब यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा बाय स्नेल्स लॉ when light travel from air to glass, and प्लीज ये कंसेप्ट है सर, यहाँ ग्लास टू एयर भी तो कंसेप्ट है सर, ग्लास टू एयर है, बट द प्रॉब्लम इज दैट whatever I am taking, even this angle r, even this I minus r is observed when I have taken incident ray as I in air, and this I minus r is the angle forming in glass. Even this r is the angle forming in glass. So the concept is light traveling from air to glass, not from glass to air. Glass to air concept होता तो मैं यहाँ के angles पे बात करता. Concept रखो please. So this is by Snell's law when light travel from air to glass. How we write? We write air to glass, right? So it is going in glass, so mu g coming from air, so here it is A. That is mu of g with respect to air. Right? I am sure, please refer my videos carefully. ये clear है कि air से आ रहा है light because mu के पहले air लिखा है, mu के बाद glass लिखा है. तो mu glass में light जा रहा है, air से light आ रहा है. Now this can be written as sir mu g divided by mu a. Mu g divided by mu a, and mu g is how much? Mu. Mu g is how much? Mu. According to question, mu g is mu, and mu a is 1. So ultimately it is mu, and this mu is equal to, मेरा next concept, this entire thing become mu now, and this mu is equal to, मैंने एक और चीज बताया था, लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से. तो जहां से लाइट आती है उसका एंगल, उसकी वेलोसिटी, उसका वेवलेंथ सब ऊपर रहता है, न्यूमरेटर में रहता है. तो एयर में क्या एंगल बन रहा है? आई. तो एयर इट विल बी साइन आई डिवाइडेड बाय, ग्लास में क्या एंगल बन रहा है सर? साइन आर. ग्लास में आर बन रहा है सर, आई माइनस आर भी तो बन रहा है. सॉरी माय डियर, please don't play with the Snell's law. Snell's law says that it is incident angle and refraction angle, not the balance angle I minus r. I hope it is clear. So मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि जब इंसिडेंट एंगल था एयर में तो कितना एंगल था I, और जब वो ग्लास में रिफ्रैक्ट होके आया तो एंगल कितना है R. So Snell's law is sin I by sin R. And important concept is here this is represented by mu. No, nothing in the suffix neither g neither a, because I have converted mu of g with air can be written as mu of g divided by mu of a. Sir, mu of g is given mu and mu of air is 1. So ultimately ये पूरा का पूरा this entire mu of g with a is now called mu. Mu नाम हो गया इसका. So ये क्वेश्चन होता है ऐसा कि आप देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया है. Refractive index of glass they have given mu. So now this is mu is equal to sin I by sin r. So therefore my dear, I hope यहाँ से clear हुआ. Sin r is equal to what? Sin r is equal to sin I divided by mu. This I will put it as equation number 5. This I will put it as equation number 5. Please take care. Now my dear, I will now say substituting equation 5 in 4. So what I'll get? D is equal to T, this is sin I minus cos I, okay, and sin R. Sin R is nothing but sin I upon mu. Sin I upon mu, na? Sin R is sin I upon mu. So this is sin I upon mu, and here in denominator it is cos R. I hope it is clear, because sin I by mu is sin R. So in this equation 4, sin R is replaced by sin I by mu, and this sin I by mu I have written here. Now my dear, you can see in this equation sin I is common, so D is equal to T sin I, and this become 1 minus cos I upon
mu into cos r. This is your equation number say 6. Now my dear, here it is again a concept. Here it is a concept. Now what is the concept? You are supposed to note it down that what is the concept here. My dear, here why I am going further of this. How I will come to know that where is the end of this topic. Can't I say this is the value of lateral displacement? No my dear. What was the method actually? While solving the numericals, there was a method and there is a sense also. My dear, what science wanted to get down, that with the help of angle of incidence only, I can calculate lateral displacement. Lateral displacement calculate करने के लिए खाली angle of incidence is enough. No angle of refraction is required. Please आप मेरा ये बात सुन लो, because this is very important with the exam numerical point of view. And therefore my dear, what the science has decided, here there is a cos r. Eliminate this cos r in I. That is angle of refraction, this r is eliminated in such a way that it will be changed into angle of incidence. तब जाके my derivation will be get over. So please try to understand why I am not ending my derivation at this step. Because in this step, so sine carrying angle I, even numerator cos carrying angle I, but denominator cos carrying angle R. So what is my intention after this step? That this cos R should be replaced by angle of incidence, that is I. I am not saying cos is replaced by cos, but it should be, the R angle should be replaced by I. So that once I got the formula, I will tell you that only with the help of angle of incidence we can calculate the lateral displacement. No need to calculate the angle of refraction. Angle of refraction का जरूरत ही नहीं है. So here my dear, please write it down this much, and then I will wipe out my board from this side, and then I will go further to show the derivations का further part. Please pause करो वीडियो को और यहाँ तक लिख लो please. So my dear, now let's begin for this. The equation number 6 is d is equal to t sin I. This is 1 minus cos I divided by mu cos R. This is equation number 6. Now my dear, as I said, what is my intention? My intention is that this R, cos R, should be changed in the angle of incidence as I. In short, मेरे को सारे angle incidence चाहिए, angle of incidence चाहिए, मेरे को कोई refraction angle नहीं चाहिए. Then only I will say my derivation is over. So this is d is equal to, you all know that since my dear cos square r is equal to 1 minus sin square r, because cos square r plus sin square r is 1. So cos square r is equal to 1 minus sin square r. So this give me cos r is equal to under root 1 minus sin square r, which can, therefore my dear, this can be written as, therefore d is equal to t sin I. This is 1 minus cos I divided by mu into 1 under root 1 minus sin square r. You can see t sin I 1 minus cos I mu, yes mu, and cos r is written as under root 1 minus sin square r. Now this can be written as, my dear, since you all know that sin r is equal to sin I by mu. Sin r is equal to sin I by mu, equation number 5. So now my dear, therefore this will become d is equal to t sin I. This is 1 minus cos I upon, this is mu, this is under root 1 minus sin square r will become sin square I upon mu square.
because sin r is sin I by mu. So sin square r will be sin square I by mu square. Now next step. This is d is equal to t sin I. This is 1 minus cos I divided by mu, right, into under root. This is mu square into 1 become mu square minus sin square I divided by mu square. What I did, I have multiplied this mu square with 1, LCM process. Mu square into 1 will be mu square minus sin square I upon mu square. Now my dear, what will happen? This is d is equal to t sin I. You can see from my topic, oh God, now I am getting only angle of incidence. Here also I, here also I, here also I, only angle of incidence. No concept of refraction, that's the topic, my dear. That's a factor. There is a question on which factor the lateral displacement depends. Angle of incidence is a great factor. Angle of incidence is a great factor for the lateral displacement. So here this is t sin I. This is 1 minus cos I divided by, this is mu square and it is under root. So this mu square will come out, become mu, and now it is under root of mu square minus sin square I. And this mu square will come out of under root as divided by mu. So mu and mu cancel. So d is equal to, my dear, sin I. D is equal to t sin I. This is 1 minus cos I divided by under root of mu square minus sin square I. This is the final answer for this question, my dear, and this is the derivation, or you can say expression, for the lateral displacement. So the formula of lateral displacement is small d, that is lateral displacement, is t sin I whole multiply by 1 minus cos I divided by under root of mu square minus sin square I. My dear, and here you can see with your naked eye that only angle of incidence is there in the topic, whereas in the equation number 6, I have not ended up at the equation 6. I have not said that this is the formula for lateral displacement. The problem was that we teacher is to see that none of the angle can be accept as I. I को छोड़ के दूसरा कोई angle नहीं होना चाहिए. उस अगर वो एंगल है तो I will convert that angle till entire derivation is come into I and I. That is angle of incidence के terms में. Okay. So now this is, my dear, I hope it is a derivations for this question. That is, I have completed this part. What is an expression for lateral displacement? This is the answer for lateral displacement. फिर से मैं pause कर रहा हूँ. You write it down so much, and then we will discuss this talk. Can lateral shift or lateral displacement exceed this thickness? And the second part of that, on what factor this lateral displacement depends. Okay, so these two things I supposed to tell you, but by that time again you pause the video and write it down, and then I will tell you what you're supposed to do. Well, now my dear, they are asking this question, that's the second part. Can lateral shift or lateral displacement exceeds thickness? And this is the formula of lateral displacement. D is equal to T sin I. आप देख सकते हो beginning में T है. That is thickness multiply by sin I whole multiply by 1 minus cos I divided by under root mu square minus sin square I. My dear, ये जो पूछ रहा है इसका actual मतलब है क्या lateral displacement का max value क्या होगा? Please ये क्वेश्चन को आप अदर वे राउंड सोचो. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मैक्स वैल्यू थिकनेस को एक्सीड कर देगा? मैक्स वैल्यू, दैट्स अ क्वेश्चन. क्योंकि लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या थिकनेस को एक्सीड करेगा? सर लैटरल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू. किसी के भी दो वैल्यूज होते हैं, किसी के भी एक मीन वैल्यू होता है मिनिमम और एक मैक्सिमम. तो हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सीड द थिकनेस, मतलब क्या इसका जो मैक्स वैल्यू आएगा डिस्प्लेसमेंट का, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू आएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, क्या वो ग्लास स्लैब के थिकनेस से ज़्यादा हो सकता है?
है ना, ज्यादा से ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। सो माय डियर, एक कंसेप्ट है आपको लिए, ओ प्लीज आप सुनो अभी। सर यू वांट दिस डी शुड बी मैक्सिमम, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी शुड बी डी मैक्स। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कब होगा ये? when angle I tends to 90 degree, when angle I is 90 degree, because sin I tends to sin 90 and sin 90 is 1, that is max value. मतलब माय डियर, डी मैक्सिमम तभी होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मैक्स वैल्यू तब अचीव होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, क्योंकि सर साइन एंगल लेके बैठा है, डी साइन टी साइन आई, बाद में बाकी लोग का मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट इनिशियली क्या है? टी साइन आई, मतलब डी विल मैक्स व्हेन साइन विल मैक्स। डी उसी समय मैक्स होगा जब साइन का ये एंगल मैक्स होगा। साइन का विच एंगल इज मैक्सिमम? 90 डिग्री, साइन 90 इज 1। इन दैट टाइम माय डियर, व्हेन आई टेंड्स टू 90, cos I, that is cos 90 and cos 90 become 0। ब्यूटीफुल। तो हुआ क्या सर? फॉर्मूला क्या हो गया? Therefore this D become D maximum, thus ये D का वैल्यू क्या हो गया? D maximum, and that D maximum is equal to T sin I का वैल्यू 90, 1 minus cos का वैल्यू 90 divided by under root of mu square minus sin square 90। My dear, cos 90 is 0, so D max का वैल्यू क्या आया? Come on, this is T sin 90 is 1 and this is 1 minus 0, because cos 90 न्यूमरेटर में 0 हो गया। सो आंसर क्या है डी मैक्स का? मैक्सिमम कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अप टू थिकनेस। मतलब मैक्स टू मैक्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहां तक मैक्स हो सकता है? सर जितना ग्लास स्लैब का थिकनेस है उतना ही हो सकता है। सो दस व्हाट इज योर कंक्लूजन? दस वैल्यू ऑफ डी, दिस इज मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? टी तक हो सकता है। सो जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होना चाहिए शुड बी लेस देन और इक्वल टू टी। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि सर मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज अप टू थिकनेस। सो जो नॉर्मल लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, दस यू कैन से लैटरल डिस्प्लेसमेंट exceeds maximum up to the thickness T of glass slab. Lateral displacement, that is small d, exceeds maximum up to the thickness T of the glass slab, otherwise its value should be less than T। अदरवाइज उसका वैल्यू सर T से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम वो कितना इक्वल हो सकता है? T के इक्वल हो सकता है। तो आई मेक दिस कंक्लूजन दैट D शुड बी लेस देन और इक्वल टू T। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इस T के या तो इक्वल होगा, मैक्स वैल्यू इक्वल होगा T के, और या तो अगर हम मैक्स, क्योंकि हमेशा हमको मैक्स नहीं मिलेगा, या तो D का वैल्यू, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू T से कम होगा। एम आई क्लियर? बट T से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो दिस इज माय डियर, प्लीज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो वापस से देख लो। सर लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन पूछ रहे क्या वो थिकनेस से मैक्स हो जाएगा? अरे सर उसका कौन सा वैल्यू थिकनेस से मैक्स, मतलब मैक्स वैल्यू, क्योंकि किसी के भी दो ही वैल्यू होते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है मतलब इसका मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि इसका मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, क्या थिकनेस तक, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब से ज़्यादा हो सकता है क्या? सो माय डियर, मैंने ऐसा काम किया कि डी का वैल्यू डी मैक्स चाहिए, तो डी मैक्स मैंने ढूंढा कि यार इसका डी मैक्स क्या है, चलो हम लोग निकालते हैं कि कितना मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो जब मैं वो निकालने लगा तो मेरे को ये पता चला कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तभी होगा जब आई का वैल्यू 90 होगा, बिकॉज यहाँ टी साइन आई है, बाद में पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है।
सो टी साइन आई में पहले यहीं अटक जाऊंगा नहीं तो। सो ये मैक्स तभी होगा जब आई 90 होगा, क्योंकि साइन का 90 मैक्स होता है और कॉस 90 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये सेकेंड टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा टी साइन 90, दैट इज टी इंटू 1, दिस इज 1, टी साइन 90 आई हैव रिटन, दिस इज 1 माइनस कॉस 90 अपॉन सो एंड सो। माय डियर, इसके आगे मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज कॉस 90 0 है। सो आंसर हुआ टी साइन 90 1 हो गया, दिस इज 1 माइनस 0 इज 1 एंड द आंसर इज टी। मतलब मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज थिकनेस, उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा, उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट इज द कंक्लूजन। सो माय डियर, आफ्टर दिस द क्वेश्चन इज factors on which lateral displacement depends. My dear, you can see the formula. We know that lateral displacement d is equal to t sin I. This is 1 minus cos I upon under root of mu square minus sin square I. This is the formula. I hope it is clear. Right? Now my dear, यहां से हम लोग देखेंगे क्या क्या फैक्टर है। पहला फैक्टर, it depends upon thickness of glass slab. So simple. थिकनेस मतलब डिनोटेड बाय टी। सी द फॉर्मूला, डी के फॉर्मूले में पहले ही टी आ रहा है। सो इट डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, बिंदास लिखना। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन, अच्छा थिकनेस पे भी कैसे है डिपेंड है, डायरेक्टली जितना ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना कम थिकनेस उतना कम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ब्यूटीफुल कंसेप्ट। सेकेंड, it depends upon angle of incidence. It depend upon angle of incidence. इसलिए मैडम मेरे को याद होगा आपको, मैंने कॉसार आ रहा था, कॉसार को मैंने आई में कन्वर्ट किया। सी कॉसार को मैंने करते आई ब्रिंग इट इनटू आई फॉर्म, सब आई में आ गए। कितने देर से मैं बोल रहा हूं कि खाली एक ही एंगल पे डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल्स को समझो नहीं तो बेस खत्म हो जाएगा। इट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और कैसे डिपेंड कर रहा है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई माय डियर। सो इट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, you can see here, as angle of incidence increases, d increases। तो यहां पे मैं लिखता हूं, it depends directly upon, it depends directly on angle of incidence। as angle of incidence देख सकते हो, आई बढ़ेगा lateral displacement भी बढ़ेगा। और आई का मैक्स वैल्यू कितना रखा था, 90, साइन में 90 मैक्स होता है, तो इस समय lateral displacement सबसे ज्यादा होगा। तो ये कैसे बढ़ रहा है, आई के बढ़ने से, टी के बढ़ने से। और एक और मेरे भाई बहन, the third also, it depend upon refractive index, it depend upon the refractive index, that is mu of glass. It depend upon refractive index, that is mu of glass. You can see in the formula, refractive index भी है, mu भी है। So my dear, lateral displacement तीन चीज पे डिपेंड करता है। It depend thickness के ऊपर directly, it depend directly on angle of incidence, and तीसरा mu के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप सोच सकते हो सर ये डायरेक्टली कैसे हुआ, इनवर्सली होना चाहिए। माय डियर, जैसे ही म्यू बढ़ेगा, यहां देखो कैसे डी बढ़ जाता है। यहां देखो, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, म्यू यहां पे जैसे ही इंक्रीज किया, सपोज देखो म्यू इंक्रीज किया, तो जैसे ये म्यू इंक्रीज हुआ मेरे बच्चों, ये जो टर्म है कॉस आई अपॉन अंडर रूट सो एंड सो डिक्रीज हो जाएगा।
क्योंकि म्यू डिनोमिनेटर में है कॉस आई के। प्लीज आप लोग सुनो, बिकॉज जो मैथ स्टूडेंट है और बायो स्टूडेंट सारे बच्चे ध्यान रखना। सर जैसे ही म्यू बढ़ा, सी हाउ आई से हाउ डी एंड म्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर जैसे ही ये म्यू बढ़ेगा, ये जो टर्म है कॉस आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई कम हो जाएगा। क्यों? ये म्यू बढ़ने से ये टर्म कम हो जाएगा, बिकॉज म्यू इज इन डिनोमिनेटर। सो ये पूरा का पूरा टर्म कम हो जाएगा व्हेन म्यू इंक्रीजेस। अगर ये टर्म कम हो जाएगा तो 1 माइनस 1 से ये जो टर्म है माइनस हो रहा है, वो माइनस वाला टर्म कम हो जाएगा। तो 1 से कोई चीज जो कम माइनस हो रहा है वो कम हो गया, तो ये आंसर बढ़ेगा। आप देख सकते हो, आप यहां से देखो 1 माइनस 0.5 होता अगर ये पूरा आंसर, तो 0.5 आंसर आएगा। बट अगर ये 0.3 हो जाएगा तो ये 0.7 हो जाएगा। सो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर अगर म्यू बढ़ता है तो कॉस आई अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म, म्यू डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा का पूरा टर्म कम हो जाएगा। और उसके वजह से सर 1 माइनस ये टर्म जो कम हो गया, 1 में से वो माइनस होगा तो आंसर बढ़ेगा, क्योंकि 1 माइनस 0.3 इज 0.7, बट 1 माइनस 0.5 इज 0.5, है ना। तो ये टर्म अगर कम हो गया तो 1 से माइनस करने पे वो आंसर ज्यादा आएगा। और मेरे बच्चों फिर क्या होगा, टी साइन आई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज्यादा होगा। सो मेरा कहना है कि डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास, नो डाउट, दैट इज व्हेन mu increases, when mu increases d also increase। मतलब सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। It depend directly on thickness, it depend directly on angle of incidence, it depend directly on refractive index of glass। और मैंने ये सिखाया बेटा कि कैसे म्यू बढ़ने से डी कम होता है, डी बढ़ता है। आप देख लो वापस से। सर जैसे ये म्यू बढ़ेगा, जो सेकंड टर्म है कॉस आई अपॉन ये, क्योंकि म्यू डिनोमिनेटर में ये टर्म के, तो सर म्यू बढ़ेगा तो ये टर्म जो है वो कम हो जाएगा। और जब ये टर्म कम हो जाएगा तो 1 में से जब मैं माइनस करूंगा किसी कम नंबर को, तो जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। और 1 में से अगर ज्यादा नंबर को माइनस करता तो आंसर भी कम होता उतना ज्यादा। बट 1 में से मैंने किसी कम नंबर को माइनस किया तो आंसर कम होगा। तो जितना म्यू बढ़ते जाएगा उतना 1 में से जो नंबर माइनस करना है वो कम होते जाएगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो बढ़ते जाएगा। और टी साइन आई जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बढ़ेगा। सो माय डियर, आई होप दिस इज द टॉपिक and this is all factors. Please take care of this question. There are 3 questions in this topic, therefore it increases with the length time. That one is the obtained expression for lateral displacement. Second my dear, क्या lateral displacement thickness से ज़्यादा हो सकता है? And third, what are the factors on which the lateral displacement depends? So there are 3 factors. It depend upon the thickness of the glass slab. कैसे depend है? Directly. Second, it depend upon angle of incidence of the light. और कैसे डिपेंड है? डायरेक्टली। एंड थर्ड, इट डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एम आई क्लियर, ऑफ द ग्लास, और वहां पे भी कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली। व्हेन आर आई इंक्रीज होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कंसेप्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद। दिस मच इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।